नहीं, मैं इसका खैर मुक़द्दम करता हूँ, वेलकम करता हूँ। और मैं तो ये उम्मीद कर रहा था कि ये 12 दिन पहले ही हो जाएगा और ये सही एक्शन लिया गया और पूरा मुल्क हुकूमत के साथ है, क्योंकि दहशतगर्दी में जो वाक़यात हुए हैं, चाहे पठानकोट हो, उरी हो, पुलवामा हो, तो जो आज जो एक्शन लिया गया हम इसका वेलकम करते हैं। और साथ ही साथ हम हुकूमत से ये भी कहना चाहेंगे कि अगर पाकिस्तान की तरफ से कोई हिमाकत होती है तो हमारी हुकूमत से उम्मीद करते हैं कि वो पूरी तरह चौकस और तैयार रहेगी, हमारी आर्मी, हमारी नेवी और हमारी एयरफोर्स। और तीसरी बात यह है कि यूएन चार्टर के आर्टिकल 51 के तहत सेल्फ डिफेंस का इख्तियार दिया गया है किसी मुल्क को, और आर्टिकल 51 के तहत अगर कोई नॉन स्टेट एक्टर्स को कोई मुल्क की सरकार उन नॉन स्टेट एक्टर्स को नहीं रोकती है, तो मौजूदा जो उसका इंटरप्रिटेशन है, जो मॉडर्न इंटरप्रिटेशन है 51 का, आर्टिकल 51 का इंटरनेशनल लॉ का, उसके तहत सेल्फ डिफेंस लेने का इख्तियार है और हिंदुस्तान ने उस 51 का इख्तियार किया है। तो मैं अपनी पार्टी की जानिब से आज जो फैसला लिया गया है उसका खैर मुक़द्दम करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि हम हाफिज़ सईद को और मसूद अज़हर को, ये दोनों जो शयातीन हैं, इनका भी हम ताक़ुब करेंगे। इसके बाद अभी जब पाकिस्तान अगर रिटेलिएट करता है तो किस प्रकार से भारत को जवाब देना चाहिए, या फिर मोदी जिस प्रकार से कर रही है ये सरकार, जो उन्होंने कहा था कि इसका जवाब जरूर दिया जाएगा, तो आप समझते हैं कि उन्होंने करके दिखाया है? नहीं, हमारी एयरफोर्स ने जवाब दिया है और मैंने जैसा कहा कि मैं हुकूमत के और एयरफोर्स और हमारे आर्मी के फैसले के साथ खड़ा हूँ। और देखिए, यूनाइटेड नेशन का जो चार्टर है 51, उसके तहत सेल्फ डिफेंस का इख्तियार एक मुल्क को हासिल है और पाकिस्तान ख़ुद इन दहशतगर्द तंजीमों को, जो इनको नॉन स्टेट एक्टर्स कहते हैं, उनको कंट्रोल नहीं कर रहा है। तो हमने एक्शन लिया है, इसमें कोई गलत नहीं है। बार-बार ये सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल या निशान उठाते हैं, तो अभी इससे ये साफ हो रहा है कि किस प्रकार से जवाब दिया जा सकता है। देखिए, मैं तो, आप जानते हैं कि मैं सर्जिकल स्ट्राइक पर भी सवाल नहीं उठाया था। मैंने उस वक्त भी कहा था कि सर्जिकल स्ट्राइक हुआ है। अभी तक हाँ, औपचारिक घोषणा नहीं हुई है और हम सब इंतज़ार कर रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि सभी पार्टी को बुलाकर प्रधानमंत्री को इस बात को ब्रीफ करना चाहिए कि जो ऑपरेशन हुआ है एयरफोर्स की तरफ से, उसकी क्या उसके परिणाम आए, क्या उसका आउटकम आया। लोग इंतज़ार कर रहे हैं, देश इस बात का इंतज़ार कर रहा है। ये बात सही है कि पुलवामा के बाद लोगों में जो पूरे देश के अंदर एक गम और गुस्सा है और पाकिस्तान के प्रति नाराज़गी है, और लोग बहुत जल्दी में और इमीडिएटली चाहते हैं कि कोई बड़ा ऑपरेशन होना चाहिए आतंकवादियों के ख़िलाफ़, ताकि आगे ऐसी घटना जो पुलवामा में हुआ है फिर आगे न दोहराई जाए। क्योंकि अभी सर ऑपोजिशन की मीटिंग भी हुई थी, ऑपोजिशन की मीटिंग में साफ कहा गया था कि पाकिस्तान के आतंकियों के खिलाफ कोई कार्रवाई हो तो सारा दल बल, विपक्ष पार्टियां उसके साथ हैं। बिल्कुल, ये बात तो ऑल पार्टी मीटिंग्स जब हुई थी तो उसमें सभी पार्टियों के नेताओं ने इस बात का आश्वासन दिया था सरकार को कि पाकिस्तान के खिलाफ और आतंकवाद के खिलाफ अगर कोई भी कार्रवाई होगी, सरकार कोई भी कदम उठाएगी, तो सारा देश उनके पीछे होगा। Miraj has dropped 1,000-pound bomb. Yes, right. It's actually mostly on our own territory, which is called POK, Pakistan Occupied Kashmir. So there's no, I mean, you can always bomb your own territory, nothing wrong. But even if it was their territory, we have under the United Nations Charter the right of self-defense. And they did attack us. They have been attacking us and bleeding us. They themselves say we want to give 1,000 cuts to India. So I think our government did the right thing by giving them 1,000-pound bomb instead, you see. But this is only a first step. I think our objective should be
to break Pakistan into four, because it's an artificial union created out of Indian territory, so that people can live in, the Muslims can live in peace in their own country. But they have been butchering Baluchis, Pakhtunis, Sindhis. I mean, this is too much. I mean, we gave this land for nothing then. And on top of that, they are attacking us. We have been to war 4 times, and all the time, all goody things were sitting on the table and losing. That's what has been our fate. We were aware, our Honorable Prime Minister, after the Pulwama attack, had told the nation that we would react to this, and so this had happened. It was quite a moment of, I think, which as a CRP man, I would say that it has been the right thing, because it has avenged the kind of very dastardly attack that they had instituted on our soldiers. So we all feel very happy about it. Sir, also the amount of it's that again the IAF sources says that 12 Mirage 20,000 jets took part in that operation and dropped 1,000 kg bombs on the camp, sir. So how does it feel like regarding the amount of the attack, sir? So what do you think on it, sir? Well, I am not an expert on the kind of attack that they have done, but if the IAF has chosen to drop the bomb, they must have calculated the kind of requirement before taking such a decision. So I think what they have done must be the correct thing. Mirage is a very, very superb aircraft. 12 aircraft carrying 1,000 kg bombs must have devastated that entire area in totality. However, Pakistan has gone into a denial mode that Jaish-e camps, terrorist camps, must have been completely obliterated. I have no doubts on that. I am very sure that sooner than later the damage assessment report will also be released, because 1 or 2 aircraft take photographs to indicate what is the quantum of damage that has been done. And once we release the damage assessment reports, Pakistan's conviction or statements that Indians withdrew after they scrambled their jets would be proven wrong, and we will be able to convince the world that India has done the needful. As an ex-army man, how much damage was done there after dropping the 1,000 kg bomb on ground zero? Those terrorist training camps would have completely been obliterated. I have no doubts on that, and everything that is there, whether in terms of infrastructure or human beings or any weapon systems, etc., would have been completely destroyed. The fact that India has used the Air Force and air power in the post-Pulwama context is a very significant development. There have been reports from Pakistan also that yes, Indian fighters had entered Pakistan airspace, and the Pakistani reports are talking about payload having been dropped near Balakot. So this is a kind of confirmation from the other side also. My reading is that this is a very strong signal from India, a signal both of resolve, which Prime Minister Modi had indicated immediately after Pulwama that there would be a response from India, and also of restraint, because the fact is that yes, Indian fighters evaded the radar on the other side and were able to enter, and they had acquired a target, which is in the Balakot area, and there are reports of other areas also, and the payload was dropped and they returned. So I think this is the signal that India does not want to go beyond the terror infrastructure of Pakistan. And now the ball is in Pakistan's court to respond, because India has signaled, as I said, its intent, which is a combination of resolve and restraint. More details are expected, I think, in the official briefing, but the critical part now is how Pakistan will respond to this particular Indian move, and whether or not they would be able to understand that India is sending a very strong signal, and what kind of a story Pakistan wants to put on this particular development. Because they have two options. One is they have already said that there was no damage and that the Indian jets were forced to return. This could be a way of saving honor, and then opening the diplomatic window and dealing with the terror issue in the way that India and the global community expects of Pakistan, which is that to crack down on the Jaish-e-Mohammed, which has claimed responsibility for Pulwama. So I think we should keep that political objective in mind.